हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर है और मैं मोहम्मद और आप लतीफ। देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मजे की होने वाली है। बहुत ज्यादा मजे की, क्योंकि ये है मिस्टर इंडिया पता नहीं ऐसे करके हैं। इनकी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं। ये एक्सरसाइज पे भी हमारे वीडियोस बनाते हैं। ये काफी चीजें ऐसे आयुर्वेदा के भी बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं इनको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे भी बड़े अच्छे मतलब यूट्यूबर लगते हैं। और इनके जो व्यूज होते हैं वो एक अनबायस्ड और फेयर होते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मजेदार। हाँ, तो यार ये टाइटल थोड़ा सा बता दो। टाइटल है 25 कॉमन इंडियन रिचुअल्स दैट आर सरप्राइजिंगली लॉजिकल। Oh my God, 25 common Indian rituals that are surprisingly लॉजिकल। Okay, so guys, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने एंड तक हमारे साथ बने रहना है। वीडियो को मजा आएगा। स्टार्ट करने से पहले गाइस लाइक कर दें वीडियो को हमारी और सब्सक्राइब कर दें। और काफी लोग ऐसे हैं सब्सक्राइब वाले जो है ना वो आई थिंक 5 to 6% है जो देखते हैं हमारी वीडियो। 90+ जो है वो ऐसे ही हैं। ऐसे ही है। तो हमें फेयर रिएक्शन देने का हमें ये सिला ना फेयर देते हैं इसलिए हमारे थोड़े से कम आते हैं। लोग पूछते हैं यार आपके सब्सक्राइबर इतने कम है, आप इतना अच्छा रिएक्शन देते हैं। तो वजह ये है कि यार हम कोई फेकनेस नहीं लेके आते अपनी वीडियोस में। हम रियलिटी को टच करते हैं जितना हो सकता है और हम एक्सेप्ट करते हैं जो चीज़ हमारे पाकिस्तानियों में कमी है या गलत है वो हम चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो काइंडली हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किस लिए हमेशा की तरह कॉमेडी के साथ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। India is a pristine land of innumerable traditions and rituals. Although, despite having witnessed or belonged to this rich society, we lack the understanding behind several rituals and brand them superstitious and meaningless. Watching this video till the end, I am sure you will be amazed and proud to know how thoughtful our ancestors were in designing various rituals and customs for our holistic well being. So, without any further delay, let's get started. Hello friends, welcome to FitTuber. What is the significance of Navratri? Ever thought of it? Well, literally Navratri means 9 auspicious nights. It is observed once in the beginning of summer and next in the beginning of winters. If you observe the pattern, it is celebrated at the 2 junctures of seasonal change. As the seasons change, the inner chemistry of human beings also changes. During this transition, the body's immunity goes downhill. We are more vulnerable to infections. So observing fasts was found to be an intelligent way to handle the situation. Even if you are not fasting, it was advised to keep your diet light during the Navratris. This so-called superstition was not only a way to prevent diseases but also a smart half-yearly detox routine. Whether it is Ayurveda or modern science, both are unanimous about the benefits of fasting. Even spiritually, ancient seers and saints found Navratri nights to be more conducive for sadhana. Overall, Navratri is an opportunity for the people to grow physically as well as spiritually. Ever wondered why is the people tree worshipped? This is because the people tree exhales an extremely high amounts of oxygen during the day. Women were advised to walk around the people tree early in the morning for ideal hormonal balance and easy conception. The purpose of keeping an idol was to give them all the more reason to follow this practice diligently. Apart from this, Ayurvedic scriptures talk about numerous medicinal uses of various parts of the people tree. Then you might have also heard someone saying that ghost resides on the branches of the people tree at night. The fact is that the people tree, due to its dense nature, also releases very high carbon dioxide during the night. Naturally, anyone sleeping under the people tree will be oxygen deprived. So this is nothing but a good example of how metaphoric language was used to simplify something complex, which later gets construed as a superstition. Why is the tulsi plant considered sacred? Well, it is a natural antibiotic, reduces stress, increases immunity, longevity, and has a peculiar ability to keep the insects, mosquitoes, and snakes at bay. Today, even modern scientific research has acknowledged its medicinal properties. Have you wondered if there is any basis to the makeup worn by Indian women apart from its aesthetic appeal? Eyeliner was designed as a way of applying cooked medicinal herbs such as amalki, haritaki, and barberry to the eyes to clean, cool, and prevent them from infections. Gold jewelry worn by Indian women is not merely a status symbol, but it regulates the body temperature and enhances immunity. Then you will be amazed to know that the bangles, nose ring, earrings, and the toe ring was an intelligent way of constantly pressing the acupressure points, which helped women regulate menstrual cycles and maintain an ideal hormonal balance. During weddings, bride and grooms apply mehendi on the hand and feet, as mehendi leaves produce a cooling effect and reduces stress of the busy wedding days. All in all these rituals have certain meaning behind them. Ever thought why Indian puja involves so many precise rituals? Whether it is a temple, mosque, or a gurudwara,
these are the places with high positive energy. The devotees are asked to walk barefoot inside the place of worship as the positive vibrations can easily be absorbed through feet. During the Aarti of a deity, the conch shell would invariably be blown as it is done even today. Since villages were generally small, the sound of the shank would resound all over the village. Those who could not make it to the temple would stop whatever they were doing for a few seconds and mentally bow down to the Almighty. In Islam, this is achieved through the azan, the calling of the faithful prayer. Also, the sound produced from the shank is believed to purify the environment. Then applying tilak is another common ritual. It is applied on the spot that lies between our eyebrows, referred to as the Agni Chakra. The significance of applying tilaks at that point helps to conserve subtle energy of our body and keeps us focused. Our ancestors found that the sandalwood, turmeric and saffron paste is quite effective if applied on the Agni Chakra. This also explains why women wear a bindi at the same spot. Then have you ever wondered why yagna was performed? No. It might seem like a futile exercise of burning ghee, herbs, etc. to ashes. Although it is a sophisticated process practiced since the Vedic times to purify the surroundings. Many modern researchers too have acknowledged its benefits. Likewise, ghee lamps and agarbattis were used to create a positive aura. Then there are some rituals in India which have a symbolic meaning. For example, when we offer a coconut at the feet of a deity, we symbolically offer our own head, implying total surrender to the divine by detaching our ego from the self. There is a deep meaning as to why lotus, which is also India's national flower, is used in pujas. The lotus leaf never gets wet even though it constantly remains in water, symbolizing the man of wisdom who doesn't get swayed by sorrow or joy. Then if you have ever observed, when camphor burns, it leaves behind nothing at all but a soothing fragrance. Its use in the puja is also to mark the burning of ego and purifying the environment. Practicing and understanding the deeper meanings of such rituals keeps the head light and ego low, isn't it? Never sleep facing the north as you will get scary dreams. I'm sure you have heard this. Well, there is a reason for it. As we all know that Earth is a large magnet with north and south poles. It has a strong magnetic pull towards the poles. Living in the northern hemisphere, if we keep our head to the north and stay in the same position for 7 to 8 hours, then the magnetic pull will put an undue pressure on our brain. This may also be the reason why you sometimes wake up groggy even after a long sleep. Well, you might not be getting scary dreams, but it definitely affects your health. So any direction other than the north is okay. In Indian culture, to face east while sleeping is considered the best. Do you know what is the concept behind doing a prayer before a meal? Well, we have discussed before on the channel as to why the ancient practice of eating on the floor in Sukhasana using your hands is highly effective in assimilating the maximum nutrition from the food. Let us take this forward and understand why Indian meal, no matter which religion you came from, always started with a prayer. It's no brainer that prayer instantly calms down our mind. And when we eat with a calm mind, we are able to eat food with more awareness, which again leads to better assimilation of nutrients. Then our ancestors stressed the fact that every meal should start with a spicy food and end with a sweet. What is the reason behind this theory? It is well known that when we eat spicy foods, the body secretes digestive juices, ensuring a smooth and efficient digestion process. Thus, a meal starts off with spicy courses first. Sweets at the end not only gives us a pleasant taste, but are also associated with the feelings of satiety. It is amazing the insights our ancestors had about the subtle chemical functioning of our body. So this clearly explains how Indian superstitions were well thought of considering the various aspects of life. If you enjoyed watching this video and would like to see a part 2 of this series, then please don't forget to ओके गाइस पार्ट 2 चाहिए तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में दो अगर आप नहीं भी कहेंगे हम देंगे क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव है यार और एक चीज इसमें कॉमन लग रही है मुझे इसमें सिमिलैरिटीज हैं रिलीजन में इस्लाम और हिंदुइज्म में आपका क्या ख्याल है काफी मतलब इसमें मतलब आप मस्जिद में जाते हैं नंगे पैर ऐसी हां ये इस चीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं नंगे पैर जाते हैं दूसरी बात ये है कि आप अजान जब देते हैं या उनका जो वो भी खामोश हो जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं रिस्पेक्ट में हम भी रिस्पेक्ट में खामोश हो जाते हैं कि बाकी काम जो है ना स्किप कर दिए जाएं तो तीसरा पॉइंट ये था कि पीपल का दरख्त इसका क्या अभी जीना जाते हैं मॉस्क में हम जाते हैं तो वहां से पीपल के दरख्त हमने काफी देखे हैं तो वो क्यों होते हैं इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा
पता नहीं इसका क्या सीन और होगा, छांव बड़ी होती है और काफी छांव का हो सकता है, छांव घनी छांव होती है। और यार इसकी एज बहुत ज्यादा होती है वहाँ। एज, ओ माय गॉड, मैंने ऐसे देखे जो 18th सेंचुरी में लगे थे और अभी भी हैं, लगे हुए हैं, और अभी भी लगे हैं और बहुत ज्यादा छांव देंगे। बेहतरीन। अच्छा, चौथा पॉइंट जो था वो आपका फेवरेट है, आप ऐसे हमेशा हाँ, कहते हैं कि spicy food समोसा वाला। खाने के बाद आप कुछ बिस्कुट मीठा हो जरूर जाए, खाते थे। क्यों ना हम कुछ दोनों मीठा हो जाए। स्कूल लाइफ में ना, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हम दोनों ने ऐसे समोसे खाए, उसके बाद इसने कहा यार मीठा होना लाजम है, हमने 1-2 बिस्कुट ले लिए और उसको खाते गए। बिल्कुल ऐसे कुछ मीठा हो। बाकी यार ये गोल्ड वाली समझ नहीं है मुझे हाँ कि जो वुमेन है वो कहता है कि कुछ दिखाने के लिए नहीं पहनती, ये आपको जो है इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है। गोल्ड मतलब आपको जो जेवर वगैरह पहनती है, समझ गया मैं। तो ये क्या सीन हो सकता है यार ये काफी इसका चीजें, इम्यून सिस्टम के साथ कोई रिलेशन समझ नहीं आया। लेकिन अच्छा इनकी जो मैंने काफी वीडियोस देखी है उसमें कहते हैं कि सिल्वर, आई थिंक कॉपर के गिलास में पानी पियो तो उससे भी यही चीज होती है, सेम Immunity। इफेक्ट आते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसे। हो आई सकता है। थिंक ये कंफर्म है, ये साइंस बेस्ड है और इंडिया हिंदुइज्म ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया बिल्कुल है। ऐसे। आयुर्वेद में आई थिंक ये चीज इंट्रोड्यूस अभी हुई इसने है। तुलसी की बात की है, इसमें कई मूवीज में देखा, ड्रामों में देखा, जो सीन होता है ना उसमें एक ऊंची जगह बनाई होती है गोल करके, यहाँ 4 पार्ट्स में, ओके, उसके ऊपर इतना तुलसी का लगा है, जैसे सुबह सुबह पानी देते हैं छोटे से वो बर्तन। ब्लैक रंग का। हाँ हाँ हाँ। And उसके ऊपर तुलसी का जो पौधा छोटा सा लगा होता है ओ ना, हाँ वो कई एग्जैक्टली। ड्रामों के अंदर भी आपने देखा होगा। अच्छा ये वैसे वो भी पता नहीं अगर घरों के अंदर लगाते हैं। पानी देते हो तो आप एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज कर रहे हो, ये बिल्कुल। पॉजिटिव चीज है, मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज अच्छी चीज है। अच्छा दूसरी एक बात ऐसी है, काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं थी। बहुत कि सारी। मेहंदी लगाई जाती है इसलिए कि हाथ आपके मतलब ये कूल डाउन रहे आप, कूल कूल शादी की रातों में, मतलब आप ज्यादा प्रेशर ना ले लेना। प्रेशर मेहंदी वाली में बात बैठे है। हैं आप 2-2 हाँ। घंटे ऐसे मेहंदी से कोई कूल हो tension जाए। नहीं। वेल डन। आप लगाएंगे मेहंदी? मैं नहीं हम कुछ और आपकी कर वाइफ लेंगे, लगाएंगे। कुछ और कर लेंगे। अच्छा यार अमाद फर्श पे बैठ के खाना, ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ने भी हाथ से खाना हो। हाथ से खाना, ये हमारी एक सुन्नत है। और ये मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि रिलीजन से सिमिलर है, काफी चीजें अंदर, काफी मतलब चीजें एक-एक चीज़ similarities लेना, पाई जाती similarities हैं। पाई जाती हैं। चलो, तो पॉजिटिव चीजों में, मतलब अच्छी चीजों में। अच्छा लास्ट टाइम आपने कब हाथ से खाया? आप समोसा तो खाते रहते हैं अक्सर। मैं खास है खाने वाली चीजें काफी खाते हैं। अच्छा हम समोसा खाते थे, हमारे पास प्लेट भी होती थी, हर चीज होती थी, हम हाथ से चम्मच भी खाते होते थे। बट हम हाथ से खाते थे क्योंकि मजा ही अपना ये मैंने 5-6 साल पहले की स्टोरी मतलब सुना रहा है, जो हम मैट्रिक में होते थे 9th 10th एग्जैक्टली में। ऐसी है। मजे की टाइम था। सो गाइस मुझे काफी देर बाद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली मजे की जिसमें वीडियो काफी मेरे जो क्वेश्चंस थे ना ज़हन में दूर वो किए। सारे दूर किए, और पार्ट 2 भी इसका हमने जरूर देखना है। तो जरूर। काइंडली हमें लिंक में हमें सजेस्ट करिएगा कोई भी वीडियो इनकी, और दूसरा कि आपने इसकी रिक्वेस्ट जरूर करनी है। बिल्कुल ऐसी है। ओके गाइस हमेशा की तरह टेक केयर बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।